हेलो। ब्रो सुनना। नहीं तो कट कर लेंगे। आई एम स्टार्टिंग नाउ, ओके। बट यार ब्रो, आई थिंक ये पॉडकास्ट शिट तो फिगर आउट कर लेंगे यार। लाइक ट्राई कर लेंगे एक दो बार। वी जस्ट नीड गुड टॉपिक्स ब्रो, एंड बाकी बात तो हम हॉस्टल में भी करते ही। आई थिंक वी कैन पिक इट अप। हाँ भाई मतलब आई थिंक 420 अटेम्प्ट्स में तो हो ही जाएगा। या सेकंड फोर अटेम्प्ट है ट्वेंटी बट लकी नंबर। 4 नंबर या तक तो हो जाएगा। हाँ, आई थिंक अ कपल ऑफ मोर अटेम्प्ट्स में भी। ब्रो, आई वाज हम्म स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम आज, हम्म एंड स्कूप वूप, यू नो स्कूप वूप ना, हाँ हाँ such like random ऐसी social media page. So उन्होंने they हाँ collated stories of some redditors who हाँ like told how their high school reunion was, bro. So उसमें like they mentioned, like one person mentioned that they got a lot of apologies from their bully. Have you ever gotten bullied in school, or were स्कूल you the bully? आई थिंक यार आई वाज नीदर द बुली नॉर डिड आई गेट बुलीड एज सच। ऐसे था मतलब कि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं स्कूल में मतलब हम्म एटलीस्ट 10 तक तो। 12th में भले कम हो जाते हैं बट 10 तक तो होते ही हम्म रहते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एनीबॉडी कोड ऐसे ही कोई भी आके बुली कर जाए या फिर मैं किसी को बुली करूँ। मैं बुली तो नहीं करता था ऑब्वियसली बट हाँ हम्म। बुली भी नहीं हुआ वो। ब्रो, मेरा फेजेस थे। मैं एक ख्याल से फिफ्थ सिक्स तक बहुत बुली किया है। मतलब हाँ जैसा मेरा सर्कल होता था मैं वैसे से करने लग जाता था, तो आई हैव बुलीड। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस गाय, आई वोंट टेक द नेम, एंड हम्म so in our school every Friday we used to have our games period, right? And we हम्म used to wear track suits. So tracksuit is like a sweatshirt and a हाँ track pants, right? So there was this guy, and I, with my friends, obviously, we were two, three friends roaming around, and I pulled this guy's track pants down, bro. And ओके जैसे I मैंने mean, निमेश के साथ करा था। yeah. And हम्म the point was that guy was not my friend, na. So Animesh was your friend, and it was like under, chalo, it got under the carpet, right? कि okay, हम्म fine, दोस्त ने किया. I was not his friend, and I did that just because he was like a really innocent, quiet person, and I did that to him. And yeah, people like laughed at him, but yeah, stuff happened to him, bro. I mean, I'm not proud of it, but I did that. I think one thing jo that kind of uh, was like hit, like made me guilty, was not this incident. It was another incident where I was हाँ fighting ऐसी class में. There was random phases where we'll like कुश्ती जो होता है ना, वैसे से we हम्म used to wrestle. And there was this really thin guy who jumped on me. And you know what the fucking worst part about it was? First D, that was my section when I went to this new school. हाँ And usme, that guy only came up to me. He was the first person to come up to me and talk and was like, "Would you be my friend?" So, बचपन में तो हाँ that is how we used to do friendship now. Then नहीं मेरे साथ तो ऐसा in नहीं हुआ। हाँ बता। in fifth or sixth, again we were in the same class, and he jumped on me, and I just pushed him, and his head hit the teacher's table. और टाइम But like there फिर was भाई। there was no bleeding, हम्म but like मुझे defaulters slip होती है. You get three हाँ defaulter slip, then you are suspended. So I got one defaulter है slip. हाँ, it's like yellow card, red card kind of shit. So हाँ I got one defaulter slip, and that was the only one I got in my whole school. But what happened later was the fucked up part. So this guy's mother हम्म contacted the school authorities, and school authorities said she got the number of my mother.
एंड हाँ उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल करके शी सेड दैट विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट बिकॉज स्कूल इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड आई मतलब मीन कर नहीं सकते हो टेक्निकली शायद या कंज्यूमर अगर। बट आई डिडंट हाँ नो ये सब बट स्टिल हाँ लाइक दे वर लाइक बहुत ट्रबल कर रहे थे ट्रबल तो यार इट मेक सेंस ब्रो आई हिट देयर किड बट दे वर लाइक ऐसे मम्मी को उन्होंने फोन किया एंड देन व्हाट मेरे मम्मी को उनके घर जाके माय मदर हैड टू हाँ से apologize and everything एंड हम्म मैं आई वाज वेरी चिल आफ्टर आई वाज ओके मैन क्या ही होगा मम्मी से बात करने गई होंगी एवरीथिंग हम्म बट जब वापस आए तो माय मदर लाइक टोल्ड मी एवरीथिंग एंड थोड़ा सा एग्जैजरेट करके एंड दैट हम्म वाज माय लास्ट बुलिंग इंसिडेंट जब मैंने किसी को बुली किया हो या आई सुधार मतलब हुआ आपने उसके बाद बेसिकली। सुधार हुआ आई गॉट बुलेट उसके बाद हम्म आई मीन नॉट लाइक वेरी ऐसे एविडेंट ऐसा नहीं बुली हुआ मैं कि यू नो इट अफेक्टेड मी वेरी मच हम्म बट स्कूल में नहीं इट वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल एंड माय लोकल हाँ कॉलोनी फ्रेंड्स उनके साथ दे बुलीड मी अ बिट बिकॉज आई वाज नॉट वेरी गुड एट क्रिकेट which was like the हम्म default sport उसमें मैं इतना हम्म अच्छा नहीं था and हम्म and like there were other stuff as well going on so matlab in school I was like this naughty kid with a bunch of friends matlab हम्म like those थे like not like proper friends they were like more like इनके साथ बकचोदी करने वाले दोस्त बट हम्म कॉलोनी में आई जस्ट हैड 2 3 फ्रेंड्स एंड दे नो लाइक ऐसा होता है ना कि दिस गाय डज नॉट हैव अ फ्रेंड सर्कल ऑफ हिज ओन और मैं जस्ट उनके में घुस हम्म, गया था हाँ that is where the bullet happened and I was like कुछ so you know me अब तो but I was starting से ऐसा कि if I want like मुझे जाना है उनके उसमें तो I like buy a bat buy a football something because then वो अगर मेरा बैट यूज कर रहे हैं तो उनको मुझे खिलाना पड़ेगा ना तो that हाँ, तेरे was को बस yes, एक्सेप्टेंस चाहिए थी मतलब। हाँ हाँ मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए थी कि वो सही है। ग्रुप में ले लें नहीं मतलब वी आर सोशल बीइंग्स आफ्टर ऑल, मतलब चाहिए होता है कि हमें भी ये, हम्म वो तो हमारे जेनेट जीन्स में है, इट्स जेनेटिकली एनकोडेड इन अस कि हम एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या एक सर्कल ढूंढे हैं। मतलब कॉलेज में भी हमने हाँ बना ही लिया, मोस्ट प्रोबेबली हम्म आफ्टर कॉलेज भी बन ही जाएगा। तो अभी भी जैसे तू yeah I डेस्परेटली mean ढूंढ रहा होगा। हाँ आई एम भाई आई एम on the lookout for friends to hang out with मैं ब्रो वही सोचा था I was roaming around ऐसी कॉलोनी में I was like इतनी भी बुरी नहीं है कॉलोनी if I would just have one friend ना जिसके साथ I can talk about shit but that is the हाँ worst part about मेरी लाइफ का अभी तक ये सबसे बड़ा इशू है I have never made a good friend like a great friend closer to home तो घर पे मैं स्टार्टिंग से ही I was more lonely here near my home school में I had friends even in 11th 12th eventually made like बकचोदी वाले दोस्त जिनके साथ you can't really talk to them about anything but you can हम्म just like pass your हैंग आउट time विद देम। and hang out with them yeah like the हाँ मतलब मेरा भी typically सेम सीन है। hmm, मतलब आस पास ऐसे कोई है नहीं, मतलब ज्यादा दोस्त। कुछ मेरे को ऑनेस्टली मेरे घर के आसपास वाले लोग पसंद है भी नहीं, बट ठीक है। same bro I बट just मैं भी बोलता हूँ कि I don't like फरीदाबाद because I don't have any like I don't have a like friends there और इतना पता नहीं I just feel like it's not my vibe the city is not my vibe अरे, but if anyone watches this video, then yeah you know from Aryaman, he Faridabad desperately needs friends. तो अगर कोई yeah फरीदाबाद में है तो please contact Aryaman. I'm always on the It's lookout very for friends I like to talk to I mean I like to talk थोड़ा बहुत then like activity हो कोई तो better है but yeah but तू तो like sports में अच्छा था ना like बचपन से ही football and everything हाँ, मैं स्कूल में 2-3 टीम्स में खेलता था। मैं फुटबॉल टीम में खेलता था, फिर मैं क्रिकेट टीम में खेलता था, और मैं चेस टीम में भी था। तो ओ चेस तू तो आई चेस डोंट थिंक खेलता आई था वाज दैट गुड। हाँ हाँ, चेस भी खेलता था। हम्म मतलब आई डोंट थिंक आई वाज दैट गुड इन चेस। आई डिड वन और टू मैचेस वो जो होते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट हम्म
क्रिकेट में आई यूज टू बॉल बिकॉज मेरे से बैटिंग होती नहीं थी ढंग से, तो मैं बॉलिंग करता था. फुटबॉल वाज माय प्रेफर्ड स्पोर्ट ऑब्वियसली. सो या, तो मैं इन दो तीन टीम्स में था. आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा तरीका है टू मेक फ्रेंड्स अराउंड यार. लाइक हम्म. प्लेइंग विद, लाइक अगर तू चार पांच बाई बार एक ही टीम में खेल रहा है, लाइक विद अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल विद यू, तो आई थिंक हाँ वो, हाँ. आई गेस बचपन में मोस्टली फ्रेंडशिप, बिकॉज इतना कोई बचपन में फिल्टर नहीं डालते थे हम दोस्ती बनाने में, राइट? कि हाँ हाँ, वो तो. अभी अपना फिल्टर्स आ गए हैं कि ओके दिस गाय स्टेज मोर, शायद मतलब घर पे रहता है ज्यादातर, तो फिर इसके साथ यू डोंट गेट डेली गेट वेल विद हिम और दैट पर्सन. बचपन में तो फ्रेंड्स वर लाइक, इफ आई एम सीइंग दीज पीपल enough number of times over a period of time, then they are हाँ, my तो friends. बस वो दोस्त है. बट स्पोर्ट्स अच्छा बस. तरीका है टू मेक फ्रेंड्स ब्रो. हाँ मतलब काइंड ऑफ नाइस ही है. हम लोग ऐसे मतलब स्कूल वूल में भी फिर उधर जाते थे मैचेस के लिए. सो जैसे वी वेंट टू पांचगनी वंस. इट्स अ हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र. आई नो, वी हैड नाम अ सुना है. वीक ट्रिप शायद. No, I don't think it was a week, but yeah, around 4 days. So we stayed there and it was fun. So yeah, तो हाँ बन जाते हैं वैसे. मतलब even if now you start going to a gym or somewhere else, and then I हम्म. think मतलब even if you're an introvert, एक दो महीने में तो जो तुम्हारी टाइम पे आते हैं ना, उनसे बात बात हो ही जाती है. तो हाँ, हो जाते हैं मतलब थोड़ी बहुत तो. सेम ब्रो. यहाँ पे भी मेरी मम्मी बोलती रहती है कि यहाँ पे खेल रहे होते हैं लॉन टेनिस, हम्म. तो उनके साथ खेलने चला जा, बट मैं जाता नहीं हूँ बिकॉज आई जस्ट हैव दैट कि नहीं यार, आई वोंट मे लाइक हैंग आउट टाइप फ्रेंड्स ही बनेंगे ये सब. पता नहीं, हम्म. आई हैव नॉट बीन जॉइनिंग देम अभी. जॉइनिंग क्या, मतलब मैं गया ही नहीं उनके पास खेलने में. But I, like repeated number of time, if you meet, you make friends. And sports ka I also realized, like one person, like a common friend of ours was telling me कि उसके भी office में like they invite him to play some sports, and that is like how he has made a lot of friends. Not like उसकी team के भी नहीं है, just outside of his team. हम्म. So that is a nice thing. अपने भी office trip पे we played football, so that was like we got to know each other bit better. Like लोग गालियां वालियां दे दे रहे थे एक दूसरे को कि क्या कर रहा है तू, बॉल क्यों उड़ा, ये पे पास कर चूती है. लाइक आई डिडंट से दैट, बट लाइक ऑन द सेम वो प्रोफाइल गेम की हिट दोस में. पीपल. हाँ हाँ हाँ, हम्म. गेम की हिट में दे यूज्ड टू डू इट. And it was really fun though. I played football after a long time, हाँ. and yeah, आई office. मीन आई थिंक वीडियो गेम्स वगैरह से भी हो नहीं जाता है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड मतलब कभी कभार स्किप हो जाता है. सो आई प्ले फीफा विद अ फ्रेंड. तो फिर हम्म. मतलब इट्स फन. तो मतलब ही हैज बीन इन माय स्कूल काफी टाइम से. मतलब वी वर इन द सेम स्कूल बचपन से. हम्म. बट फिर 11th 12th में ऑब्वियसली सबका अलग अलग वहाँ से हो गया. फिर उसका कॉलेज अलग हम्म. हो गया. बट नाउ सिंस बोथ ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम, ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर. तो हम वीकेंड्स में मस्त हम्म. फीफा खेल लेते 3 4 घंटे. फिर ऐसी बात बात हो जाती है. तो दैट इज हाउ द कॉन्सर्ट प्लान गॉट मेड अप. तो वो सीधा हाँ, मैं for तो. the तो season off, yeah. हाँ, तो इट गॉट अप मेड बिकॉज वी वर प्लेइंग फीफा एंड देन ऐसे कॉन्सर्ट्स की बात चल रही थी तो फिर ये हुआ. हम्म. हाँ, लाइक अपना भी कोविड के टाइम पे, लाइक इन अ हम्म. सोसाइटी ऑफ माइंड, आई मीन आई यूज्ड टू टॉक टू दोज पीपल पहले भी, बट नॉट लाइक इतना कभी नहीं बात हुई थी. बट सिंस लाइक वी वर हम्म. जस्ट प्लेइंग एंड प्लेइंग अमंग अस हो गया, स्क्रिबल एंड एवरीथिंग, वी वर प्लेइंग इन दैट कोविड टाइम. हम्म. सो या दैट वाज लाइक अ रियली नाइस फ्रेंड सर्कल दैट वी मेड ड्यूरिंग कोविड. सो तू अपने लाइक दोस्तों से मिलने गया आफ्टर यू हैव लेफ्ट, सो आफ्टर 10th यू आल्सो चेंज योर स्कूल? हाँ हाँ, आई चेंज माई सिटी ब्रो. तो या यू वेंट टू डिफरेंट. फिटजी, पुणे? हाँ, तो वहाँ पे तो एट लेवल में मिले तो वहाँ पे तो दोस्त बन गए. हम्म. तो आई हैव नाइस फ्रेंड्स. तो व्हेनेवर आई गो बैक टू पुणे आई मीट देम.
हम्म। मतलब आई ट्राई मीटिंग देम, हर बार तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर वही एंड ये गालियाँ टेंथ तक वाली। के दोस्तों से, तो टेंथ तक के दोस्त तेरे अभी जिस सिटी में तू रह रहा है उसी सिटी में ही स्कूल था ना तेरा पहले, हाँ हाँ टेंथ हाँ तक? हाँ सो उनसे हाँ हाँ मिलने मिलने गए? हाँ, मतलब कभी कभार मिल लेता हूँ। आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हियर नाउ because this is obviously a हम्म। town, and then I हम्म। think everyone is kind of busy with their lives, and I am that सेम kind of person कि मतलब अगर ऐसे हमेशा कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो फिर I eventually lose contact। तो ब्रो आई ये डोंट, आई थिंक मैं हम्म। 10th के बाद से तो ऐसे मतलब काफी कांटेक्ट लॉस हो गया है। एक ही दो लोग हैं, उन्हीं से ऐसे हो जाता है तो हो जाता है। सेम ब्रो, मेरा बट भी आई हैड सम रियली like eventually like when I was leaving the school, like जब वो so ninth and tenth में same section रहता है, so हम्म ninth में जो दोस्त बने, some of them like the thing got a bit bitter with them. मतलब एक दो दोस्त थे जो मेरे लाइक काफी अच्छे थे, एंड उनके साथ हाँ मेरा भी वो कांटेक्ट कट हो गया जस्ट बिकॉज आई सो जब मैं यहाँ पे भी आ गया था, आई गेस आफ्टर जेई जब खत्म हो गया, बिकॉज जेई वाज लाइक बुलशिट टाइम्स ब्रो, बट हम्म आफ्टर जेई मैं गया था उन सब से मिलने, वी वॉच्ड अ मूवी, आफ्टर दैट वी hung out in like McD and everything, like we were hanging out, बट जस्ट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट इतना चेंज हो गया था ना, द कॉन्वर्जेशंस का कॉन्टेक्स्ट इतना चेंज हो गया था, बिकॉज आई थिंक 11 12th इज द टाइम वेयर मोस्टली लोग अपनी कोचिंग के लिए भी बाहर निकलते हैं, लाइक अ बिट फर्दर हम्म फ्रॉम देयर होम, तो दैट इज द टाइम वेयर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आ जाती है, थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती है, एंड दैट इज लाइक उस टाइम पे यू क्रिएट मेमोरीज, टेंथ तक यू हैव लाइक स्कूल में ही मोस्टली लोग मिल रहे होते हैं, बट आफ्टर दैट यू नो यू मीट आउटसाइड ऑफ स्कूल एज वेल, एंड उनकी वो सारी 11 ट्वेल्थ में पूरी जो उनका उन्होंने हम्म सबने साथ देखा, बिकॉज दे स्टेड फ्रेंड्स टुगेदर, दे वर इन द सेम ग्रुप, आई लेफ्ट द सिटी, तो उनका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना अबाउट अ पर्स, लाइक जो भी वो किसी लेट से किसी बंदे की बात कर रहे हैं, किसी और किसी बंदे बंदे की बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, आई वाज लाइक आउट हम्म ऑफ it only, and I was just द like पिक्चर। constantly smiling, nodding, हम्म and was like अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ, and just like that, तो थोड़ा उस सेंस में आई थिंक द context और life has like diverged a lot, but I miss some of my school friends, so उनसे इतनी बात नहीं होती because honestly uh, बात लाइक न्यू सो आई एम स्टिल इन कॉन, लाइक एक एक दोस्त है मेरा, काफी अच्छा दोस्त है, उससे मेरी बात होती हम्म रहती है, एंड इट इज मोस्टली अबाउट म्यूजिक ओनली बिकॉज वी हैव अ सिमिलर म्यूजिक टेस्ट, हम्म एंड दैट इज द थिंग नाउ, पूरा आई like I have been like 11, 12, then 4 years, around 4 years of college. Those 6 years, that guy does not know what has happened in those 6 years, right? And those were like 6 solid years where काफी चीजें हम्म अक्कल होती रहती हैं, एंड बस वो हम्म सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड समझाना इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, तो हाँ सेंस में भाई। ना आई कांटेक्ट आई लूज हो मीन गया। सबके वो भी चेंज हो जाते हैं ना, मतलब लाइफ डिफरेंट हो जाती है। आई रिसेंटली सॉ दिस diagram on Twitter itself. So there's this हम्म। guy named Tim Urban. He writes a lot of nice things and हम्म। illustrations वगैरह बनाता है। तो he made one diagram sort of thing कि मतलब ऐसे multiple rays ऐसे 5 आ रही है, अब बहुत हम्म। डिफरेंट डायरेक्शन से, फिर एक छोटा बॉक्स है वहां पे वो एक साथ है आसपास है, एंड ही wrote it, titled it as college, उस बॉक्स को। हम्म। एंड देन फिर वो आई उसमें साथ में, रिमेम्बर और इट। फिर हाँ, फिर वो बाहर जा रहे हैं एंड देन वो वापस से डाइवर्ज हो जा रहे हैं, अलग 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 अलग। हम्म। तो मतलब लाइफ का Yeah. कंटेक्स्ट भी सबका चेंज हो जाता है एंड सबके थॉट्स अलग हो जाते हैं, तो Everyone has a पता नहीं। different journey, bro. And even अभी भी I met Aniket जब वो आया था, and we had a हम्म like in 11 12th we had our friend group, and there was a third person as well, Faisal, हम्म and उसके साथ भी इतनी बात नहीं होती है जस्ट बिकॉज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉकिंग कोई सेम है नहीं, व्हेन वी वर इन हम्म स्कूल टुगेदर वी हैव लाइक स्टफ टू टॉक अबाउट, सिमिलर थिंग्स गोइंग अराउंड, क्लास में ये हो रहा है, क्लास के बाहर
we meet and stuff like that. But now he's in a different college and me and Aniket are in a different college. तो वो पूरा बताने का काफी and more often than not when Aniket, like anyway, when more two or three boys meet, more often than not, they are Hmm. going to talk about, their crushes, their relationships, or stuff like that. And वो सब बताना to a third person who has never been with it, yeah, who has not seen that person going through it, वो पूरा context देना is a very uh, Effort difficult taking task. process. Yeah, effort taking process. That's a better word. इतनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी कौन, इमोशनल एनर्जी कौन लगाए, ब्रो हाँ टाइप्स हो इट्स लाइक जाते मैं हैं. उसको बताऊं कि अच्छा बैठ सो आई मेट दिस गर्ल शी वाज देयर वी टॉक दिस इज हाउ इट वाज गोइंग दीज आर द हाइलाइट्स दिस इज हाउ इट एंडेड वो पूरा बताने सब फुल प्रॉपर 3 एक्ट मूवी दैट वी हैव जो उसको बतानी पड़ेगी अब एंड या and more often than not I think other person is also not interested in listening to all that he हाँ just भाई, wants the masala sooner bro. कौन सुने, तो इसलिए इट्स लाइक Hmm. छोड़ो. ऑलरेडी जो तुमने टाइम और एनर्जी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखी है Hmm. इन द पीपल दैट आर ऑलरेडी देयर इन अ लाइफ, उससे अच्छा कि और टाइम एंड एनर्जी वहीं पे लगा दे जब वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. ब्रो सो या आई थिंक फ्रेंडशिप ना आई थिंक एक चीज जो मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ बाय द जनरल परसेप्शन इज कि पीपल से दैट फ्रेंडशिप्स आर इजी गोइंग दे आर एफर्टलेस आई थिंक टू एन एक्सटेंट ना यस भाई. बट अगर तुम्हें अच्छी फ्रेंडशिप्स मेंटेन करनी है ना then they are not effortless they are as uh, they require as much efforts as a I won't say as much a relationship would uh, because unlike relationship friendships have a connect real connection uh, but it डोंट requires शेयर efforts योर though. रियल लाइफ ड्रामा. Yeah. Bro, what else would we talk in an hour episode? We have to bring in personal life now. But bhai, friendship takes effort, bro. You have to put in efforts, otherwise that would be ruined. Uh, बात तो हम सही है. हम सब भी आपस में we try to connect like कभी अनिमेश इधर आ गया for a surprise visit अब अनिकेत उधर चला गया पटियाला and हम्म. stuff like that just so that we have that bond together ना. आई थिंक अगर अभी भी इसलिए also share whatever is happening अगर छोटी से छोटी भी बात हो रही होती है कि ब्रो आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल एंड आई जस्ट हाँ, बता दिया मैंने कि ग्रुप में कि हाँ ब्रो ऐसे ऐसे चल रहा है आप कनेक्ट टू बना रहना चाहिए. कांस्टेंटली अपडेट हाँ ब्रो बनाना चाहिए college वरना भाई. friendships I have seen college friendships last bro मतलब कल they do last but yeah it requires effort if you want a decent friendship अगर तुम्हें वो चाहिए कि हाँ जब मैं उसके शहर में जाऊँ तब वो मुझसे मिल ले then okay तू बस फोन कर देगा मे बी उसके पास टाइम होगा तो वो आ जाएगा but if you really want like a person like uh, to be there for you emotionally and not just to hang out with उसके लिए you have to put in effort you have to constantly check in कि how the other person is doing. आई मीन मिलना भी इतना पॉसिबल नहीं होता है. मतलब वो कॉलेज तक ठीक था, अब तो भाई शेड्यूल सबके इतने वो होते हैं. फिर अगर तुम इवन इफ यू गो समवेयर ऑन अ वीकेंड, then you will have to see if the person already does not have any weekend plans. Any वरना तो weekend फिर plans, वो भी yeah. पॉसिबल है. और Hmm. ऑलरेडी वीक में तो इतना ही काम काम रहता है, सबके पास Weekend तो. weeks पे तो I don't think so there is any life. Week पे you just work and you get back home and you are tired enough. Bro, मेरे साथ क्या हुआ? I went to office. Okay, I हम्म. was literally 5 minutes late. Like I'm five also. I'm pushing for my shuttle for my bus, हम्म. and वो बस वाला चला गया. Bus takes me हम्म. 50 minutes to reach my home. और फिर मुझे मेट्रो से आना पड़ा ब्रो एंड मेट्रो टेक्स 2 आवर्स और फिर वहां से अपने घर के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से आई टेक एन ऑटो वो अलग
हम्म सो पूरा टाइम सो ट्रैवलिंग में निकल जाता है। एंड लाइक कल आई वोक अप एट व्हाट 8 o'clock, लेफ्ट माई होम एट 9:30 और समथिंग, गॉट हम्म बैक एट 10:30 फिर तो क्या ही इतना रहता है बात करने का। वीकेंड्स ही है ब्रो जब हो सकता है। एंड आई मीन आई वुड बी तो अवेलेबल ब्रो इफ एनी वन ऑफ यू शो अप इन माई टाउन और लाइक नियर बाई टाउन। ये अपने वीकेंड प्लान्स मेरे ज्यादा खास रहते मतलब बन जाते हैं, बट नॉट अबव यू ऑल यार। मतलब मेरा तो ठीक ही है, बिकॉज आई एम एट होम एंड मेरे पास आस पास ऑफिस है ही नहीं। तो फिर हम्म। मतलब चिल ही होता है कि मतलब आई गेट टाइम टू डू थिंग्स, सो आई हम्म। कैन शोज, आई कैन रीड बुक्स, आई कैन गो टू द जिम। ऐसा कभी ओकेजनल प्लान बन गया तो वो सब भी हो ही जाता है। या ब्रो वॉच शो से अरे बट ब्रो। हाँ बोल बोल। बोल बोल बोल, कोई बात नहीं। अरे मैं इंस्टाग्राम में एक पेज देख रहा था, 8 फैक्ट्स करके पेज है ब्रो, एंड हम्म, लेजिट जस्ट टू मे बी पुश द इंस्टाग्राम algorithm और क्या ब्रो, any shit they post bro, they'll post if you are binge watching a lot of shows, that may be a sign of you be having a lonely life. I mean obviously you have a life on a lonelier side if you're like having time to fucking complete 5 season in a weekend bro. उसके बाद लिखा था ड्रिंकिंग कोक एंड पेप्सी मे इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। मैंने कहा बेंचो यू आर ऑलरेडी एडिंग मे, हाउ इज इट अ फैक्ट नाउ? अरे यार मैं अपना माइक वॉल्यूम चेक कर रहा था, फिर पता चला यहाँ पे म्यूट है। अच्छा। अरे भूल। अरे ब्रो या सो तू कुछ कह यस। रहा था? अब मेरे को याद नहीं है। तो हाँ, अरे हाँ, वो कंसेप्ट कि मतलब आई एम धीरे धीरे रियलाइजिंग कि मतलब if I'm working from home, I actually have the privilege of working from anywhere. After spending four हाँ। months, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं हम्म। कर सकता हूँ, बट फिर मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ ये मेरे को अभी तक पता नहीं है। बट अब होपफुली मैं अगले 3 महीने में कोशिश करूंगा कि आई ट्राई टू या वर्क ब्रो फ्रॉम मैं भी एनीवेयर एंड नॉट जस्ट होम। होम या कर सकते हैं ट्रिप पे। वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट ना फर्स्ट लाइक अप्रैल में फॉर अ ट्रिप और समथिंग। हाँ, एंड ऑफ अप्रैल में ना। आई एम हम्म। तो एन ओनली, तो इट्स लाइक even if you guys don't come, then I'm going on a solo trip. So हैव यू ट्रैवल्ड पहले सोलो लाइक अराउंड एनीवेयर? यार, I have traveled a lot solo, but I don't think उसको हम I solo mean travel में not consider कर like सकते हैं। in, अरे ब्रो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेन से ऑफ घर आना या कॉलेज आना, लाइक जेन्युइनली किसी जगह पे जाके फॉर सम एक्टिविटी यू हैव गॉन अलोन और समथिंग। हाँ मतलब I have tried that, तो एटलीस्ट जब मैं अकेले रहता था तब तो I had some time alone, so I would go out and like go out on walks, ऐसे मतलब walks तो क्या ही बोले हम, बट हाँ कभी कभी अच्छा। खाने वगैरह चले गए if I find some nice place. So that हम्म। never to a proper place. I had thought कि एक बार कॉलेज में करूँगा, but I never got that time. ऐसे plans तो बहुत करे, but I have never actually done it. ब्रो आई वाज आल्सो हैविंग अ सिमिलर कन्वर्सेशन विद अ गाय फ्रॉम ऑफिस, एंड उसने हम्म बहुत अच्छा पॉइंट बोला। वो कहता कि ब्रो सोलो ट्रैवलिंग लाइक पीपल हु गो टू प्लेसेस लाइक अलोन, it's good for them because anyway like in their regular lives they are हम्म surrounded by people, उनके पास लोग हैं हम्म बात करने को, they have that noise around, so they want a break from that and go to solo traveling। उसने कहा bro हम solo ही हैं and then we go on solo traveling does not make sense bro, and I feel that bro। So like I was talking to Saurabh, है ना, मैं उसके पीछे हम्म गया, आई वाज टॉकिंग टू सौरभ एंड आई वाज लाइक यही नॉर्मली कि ब्रो लाइफ चेंज हो रही है एंड एवरीथिंग। सो ही मेंशन कि ब्रो अब तू इंडिविजुअलिज्म डिस्कवर करेगा, एंड आई गॉट लाइक ओके ब्रो, हाइप्ड हो गया मैं। और मैंने कहा कि नेक्स्ट वीकेंड मैं चला जाता हूँ सुंदर नर्सरी। तो दिल्ली में सुंदर नर्सरी हम्म करके एक जगह है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा सा गार्डन, उसमें एक लेक साइड कैफे है और लाइक इट्स अ रियली नाइस ब्यूटीफुल प्लेस टू गो।
मैंने कहा ठीक है, आई गो देयर। मैं गया, मेट्रो से उतरा, एंड नाउ सुंदर नर्सरी इज लाइक 3-4 किलोमीटर वॉक अराउंड, हाँ। एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई एम सोलो ट्रैवलिंग, व्हाई वुड आई टेक एन ऑटो, मैं यहाँ पे भी पैदल जाऊंगा। तो मैं पैदल सुंदर नर्सरी हम्म गया, ठीक है। सुंदर नर्सरी में मैं घूम रहा हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ओके। बट मेरा एटीट्यूड ये है कि हाँ चल, अब मैंने देख लिया जगह, अब क्या। देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, नो वन टू टॉक टू, मैं अकेला घूम रहा हूँ। एंड मैंने कहा था कि आई वोंट लिसन टू म्यूजिक, बिकॉज दैट वुड बी लाइक तू बस बाहर आया, गाने सुन के फिर वापस चला गया। आई वुड रिमूव हम्म माई ईयरफोन्स और घूमूंगा, जस्ट आई ऑब्जर्व, लाइक देखूंगा आसपास। वहां पे वो सब ग्रुप्स में आए हुए हैं, इट्स लाइक अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट टाइप प्लेस, ओके। कपल्स हम्म आए हुए हैं, एंड आई वेंट ऑन, आई गेस वैलेंटाइंस डे से पहले वाला वीकेंड। सो भाई देयर हम्म वर लाइक, प्लेस वाज फिल्ड विद कपल्स, ऑफिस पीपल जो उधर ऐसी उस पे आए हैं, क्या कहते हैं, पिकनिक टाइप सीन पे। एंड ब्रो मैं हम्म लेजिट कंफ्यूज हो गया, मैं घूम लिया, मैं पूरी जगह घूम लिया, कैफे गया, कैफे वाज फकिंग ओवरप्राइस्ड, मैं वापस आ गया, मैंने कहा नहीं जाना इधर। फिर मैं हम्म घूमा फिरा, वेंट ऑन अपने साइड में उस पे बैठ गया, बेंच पे। एंड नाउ हम्म आई डोंट लाइक, कोई आसपास नहीं है, सर ह्यूज प्लेस, तो आसपास लोग नहीं है, और मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। एंड यू नो एग्जैक्टली आई गो बाय दीज वर्ड्स, आई वाज लाइक ठीक है ब्रो, आई मीन इट इज अ बिट बोरिंग, बट इट इज बेटर देन होम। सो कर सकते हैं ये, सोलो सोलो आ सकते हैं। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज हाउ पैथेटिक इट साउंडेड, कि भाई आई एम जस्ट लाइक घर से कुछ भी, जस्ट, बट आई मतलब आई एग्री बाय द पॉइंट कि इट इज बेटर देन होम, बट इट स्टिल सक्स, इट सक्स। आई सॉ दीज टू गर्ल्स पेंटिंग, I was like, इनको अप्रोच करके जस्ट I'll just start a random conversation. It would be like, you know, just that is how you make friends, है तो दिमाग में वो चल रहा था, that is how I'll pass my time and stuff like that. Then वो हम्म like they were painting and easily, and I just realized कि bro, I am lonely, okay? I am looking for people जिनके जिनके साथ मैं, जिनके साथ बैठ के I can get entertained. वो हैं ग्रुप में, हाँ they don't want to be bothered or something like that. एंड थोड़ा सा आई वाज ऑन द बैक फुट, मैं नहीं करा, एंड आई जस्ट, हाँ आई वाज सुपर हंग्री, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, बट मैं अकेले बैठ के कहीं खाना नहीं चाहता था। तो मैं मेट्रो स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन में जो छोटा सा फूड कोर्ट होता है, मैंने वहां से एक हम्म सैंडविच लिया, खा के घर वापस आ हम्म गया। इनका ब्रो, दिस थिंग सक्स ब्रो, सोलो ट्रैवलिंग, बट स्टिल एक और जगह है मांगड़ पास में, तो मैं हम्म मांगल गया। तो इट इज लाइक अ क्लाइंबिंग, दिल्ली क्लाइंब्स करके ना, रॉक क्लाइंबिंग ग्रुप है, तो उन्होंने वहां पे एक अपना बेस सा सेटअप कर दिया है। सो दे हैव बिल्ड मोस्ट हम्म ऑफ द थिंग्स बाय हैंड। एंड इन माय लाइक, जो मैंने उनका देखा था, आई थॉट कि वहां पे बहुत ग्रुप्स आए होंगे, like obviously काफी लोग आए होंगे, and they have advertised it like as a place to bond, meet new people and stuff. So I was like okay, मैं किसी नए बंदे से मिल लूंगा, any group there would be, I can, you know, tag along and something like that, because we were going on a hike to a lake nearby. तो hiking के हम्म time तो चलो, if person is move आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ, I can talk and you know, बात कर सकते हैं। मैं गया ब्रो, कोई नहीं है उधर, उधर सिर्फ जो वहां पे जो क्लाइंबर्स हैं वो हैं, एंड हाँ उनसे टू अ पॉइंट ही बात कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वर्क टू डू, वो अपना काम कर हम्म रहे हैं। और मैं पहुंच गया था अराउंड 12-1 बजे, मैं उधर पहुंच गया था। एंड जो ट्रैक, जो हाइक था, वो 4 बजे शुरू होना था, क्योंकि धूप बहुत हो रही थी। अब हम्म 1 बजे से 4 बजे तक आई हैड नथिंग टू डू, उधर कोई नेटवर्क नहीं है, उधर कोई कुछ नहीं है। थैंकफुल टू स्पॉटिफाई प्रीमियम की मैं वो कर रखा है, कुछ कुछ ऑफलाइन कर रखे हाँ म्यूजिक में सुना उधर। फिर आई एम जस्ट फाइंडिंग, कोई भी बंदा फ्री हो जाए तो मैं उससे बात कर लूं। पहले टेबल टेनिस खेला, फिर वो काम पे निकल गए बंदे, ऑब्वियसली उनको काम है। तो हम्म वहां पे मैं काफी बोर हुआ, फिर इवेंचुअली लोग आ गए, जो ऑलरेडी लाइक क्लाइंबिंग पे गए हुए थे, वो क्लाइंबिंग से रिटर्न आ गए, तो उनसे 2-4 लोगों से बात कर ली। वी वेंट ऑन अ हम्म हाइक टू द लेक, एंड मैं हम्म इतना, तो उस पे लिखा हुआ था ऑन द वेबसाइट, एंड लाइक दिस इज अ वेरी स्मॉल ग्रुप, ओके, मोस्टली फंक्शनिंग ऑन ओवर इंस्टाग्राम। वेबसाइट पे बहुत आउटडेटेड चीज है और इट्स नॉट एक्यूरेट। तो उसने लिखा था लेक में स्विमिंग इज नॉट अलाउड,
you can just sit on Hmm. the side and stuff like that. But actually में you can go थोड़ा सा अंदर, you Hmm. can just maybe float and stuff like that. And मैं कुछ नहीं लेके गया था, I like कुछ swimming या Sad. कोई extra pair of clothes. तो मैं बस अपना ट्राउजर ऊपर करके पैर पानी में डाल के आ गया वापस. मतलब like हाँ, it was again it was better than staying at home, but it was not I mean, I would have preferred it with a friend. उसमें and they also said bro, उन्होंने कहा कि आप अकेले आए हो? कहा हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, कोई आया नहीं. कहते अच्छा, ऐसे फ्रेंड्स के साथ आना अगली बार ना, it would be more entertaining for you because अभी तो सब ग्रुप में आए हुए हैं, मैं बस just finding topics to relate and just adding a comment. ठीक है, तो समझ ले वो कुछ बोल रहा है and I was like हाँ yeah bro, I think I can relate, और एक चीज बोल दी बस फालतू की, just so that I can get in the conversation and stuff like that. उसमें ब्रो एक बंदा यार ब्रो, मतलब हम्म उसमें एक बंदा था, तो स्केट बोर्ड लॉन्ग बोर्ड लाया था, तो आई ट्राइड दैट थोड़ा बहुत, और मतलब इतना गया नहीं ज्यादा आगे, बट आई ट्राइड दैट. बट आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दीज लाइक people who follow these alt careers ना, like हम्म these rock climbing वाले लोग अब rock climbing कर रहे हैं and they have made it their like livelihood. हम्म देयर वाज दिस गाय जो अपना सर्फ बोर्ड एंड लॉन्ग बोर्ड करता है, एंड उसने अब लॉन्ग हम्म बोर्ड्स एंड सर्फ बोर्ड पेंट करना शुरू कर दिया, लाइक कस्टम डिजाइन एंड पेंटिंग. So he has a shack in Goa, I guess, and everything. They have started their हम्म career in these alternate fields as well. Like काफी इंटरेस्टिंग लोग लगे. यार मतलब आई थिंक वो ग्रुप टू ग्रुप डे डिपेंड करता है कि मतलब इफ यू फाइंड पीपल हु आर लाइक एक्चुअली इंटरेस्टेड इन हम्म. टॉकिंग तो फिर हो ही जाता है. मतलब मैं तो या. ऐसे मतलब बहुत बार लोग मिल जाते हैं कि मतलब इफ यू गो एंड टॉक टू देम दे विल टॉक बैक. तो वो हाँ लोगों पे हाँ भी हाँ. डिपेंड करता है. प्लस मोर ओवर आई थिंक कि मतलब अ, एक तो मैंने एक चीज देखी थी अ, इस पे आई थिंक ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखी होगी बट हाँ फिर वो साथ में एक आर्टिकल पे अटैच था तो मैंने वो भी पढ़ा. सो इट्स लाइक योर एज काइंड ऑफ and then your time with family, family भी नहीं actually your loneliness or the number of people you interact with daily, it increases with हम्म. uh, time. मतलब your loneliness is just going to increase with time. So this might just be a phase but yeah, How cause as देख in अभी like. जैसे I mean अभी जैसे एटलीस्ट कॉलेज अभी स्कूल में you had school friends. ठीक है तो हम्म. वो थोड़ा था बट यू हैड फैमिली एंड स्कूल में यू आर लाइक more present in a way and you are more हम्म. into your life. Like you will watch cartoon for 4 hours and you don't care about anything else. हाँ. Uh, You so will now you makes will do sense. bullshit but you will not care about हम्म. anything else because you are into हम्म. that thing. It is what is for your life. मतलब पढ़ाई नहीं करनी हम्म. है कोई बात नहीं बट तुम खेलोगे कुछ भी करोगे टाइम पास बट पता नहीं चलता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग बोर्ड because you will do something. हम्म. So and then you'll have family members around. Then you go into college, suddenly peak rise because बहुत सारे दोस्त वगैरह वगैरह. उसके बाद सॉरी पीक राइज नहीं एक्चुअली डिक्रीज लोनलीनेस की बात करें अगर तो हम. उसके बाद हम्म. फिर वापस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है बिकॉज पीपल हैव देयर ओन लाइव्स एंड थिंग्स टू थिंक अबाउट. तो हम्म. यू काइंड ऑफ गेट लोनलियर बट इट डिपेंड्स कि मतलब जो इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा था कि नाउ यू विल डिस्कवर इंडिविजुअलिज्म. तो इट इज काइंड हम्म. ऑफ ट्रू. आई मीन I've realized this कि मतलब even if you are with a group of friends or if you are with someone in a relationship, if you cannot be happy when you are alone, then you will हाँ not हाँ be हाँ. happy ऐसे. तो मतलब हम्म. and I also read this thing कि मतलब if you are not enjoying every day whatever you are doing, even if it is even if you are working anywhere and हम्म. if you are not enjoying what you are doing then something is wrong cause उसने बोला कि we have a very short life compared to the whole universe obviously कि मतलब हम्म. ऐसे blink of an eye से भी हाँ कम है. हाँ हाँ. तो फिर every day whenever you wake up you have to try to create the life you want to live
because every moment is passing and you're just getting older and weaker. So if you are not Hmm. creating the life that you want right now, then things won't matter. Even if you are with friends or if you are with someone you care about, it won't matter because at the end of the day, it might happen that you end up alone. So, matlab, it might Hmm. happen. Matlab, some people actually end up alone and they die in their bed alone at their own house without anyone else around. Hmm. Fuck, bro. So it's like you have to, matlab, it is the reality of life. But I Hmm. mean, in the short life that we have, if we are not creating and working on things that in a way that we want to, तो फिर कुछ फायदा नहीं Hmm. होगा. तो मतलब इसीलिए I'm trying to do things and I think इसीलिए ऐसे बीच में ना बहुत chaotic हो गई थी मेरी लाइफ. कि I was like कि क्या Hmm. बोर हो रहा है, कुछ है नहीं घर पे. But yeah, but eventually it got better and Hmm. eventually things will get better. It's just that we have Right. to try to be Yeah. enjoying whatever we're doing. If you don't have anything right now, then you can plan something to do To make it. जिससे Huh. तुम्हें मजे आएंगे या फिर या Right. मतलब कुछ I agree, करना bro. मतलब it Like, should be fun. I was finding so many, like initially, so they I got back home and ठीक है पहले था कि ठीक है everyone was sad, okay fine, right? Then we started Hmm. working, we were meeting, like we were meeting frequently, right? Then there was a phase where I was like struggling to make weekend plans, and I was like, bro, in college, like our weekend plans were so sorted because we were all together and we'll just decide what to do today, right? Maybe we'll go to the same place, maybe we'll do the same thing, but it would be a different experience always, right? But so I was trying to find that thing only where I was like, okay, I'll go to SA office, and from office I'll go to this friend's PG, and तब वहाँ बात कर लूंगा, I'll meet them. Or maybe let's say I was hoping कि okay, eventually couple of more of my friends would come here, like Saksham and Deepak would move here, so I would have a closer friend circle in the city, around the city. तो मेरे पास वो support होगा. Then like and everything I was trying online dating stuff, because if I have someone that I on weekends I can roam around with, hang out with, and stuff like that. But eventually it is like you are responsible for your own happiness only, bro. And Dear Zindagi Hmm. movie, and I really like that movie just because of this, because they have explored it where you know uh, you have to make your own self happy. So that is why I was like, okay, man, I would just uh, थोड़ा सा अपना I would stop my dependency on making other people's plan, या लोग उसमें Hmm. involve करेंगे तो I'll go, or I'll try to ask people out. Now I'm like, okay, if I don't like to travel solo, I won't. But then there are things that I like to do solo that I can do at my own home. Hmm. Like I'm trying writing rap verses. I'm trying this Hmm. podcasting thing. I've also for a driving seek now, just because eventually the driving is like any इधर उधर जाने की you have the freedom, and that is liberating in a sense where now you're not restricted by places that are not accessible by public transport. Hmm. So yeah, I think like you have to find your own happiness, and that is why thoda sa I was like thoda hobbies, let's pick up some hobbies. And Hmm. but still I do want those like hang like friends around me and everything like that. हाँ But हाँ. eventually I think the end goal is to remove the dependency from my friends. It's more I like my mean, friends we would should have be. friends. हाँ हाँ Hmm, बोल. I mean, it is like कि we should have friends, but they should not be the reason we are happy, or I mean, hanging out right, with huh. them or doing things with Hmm. them is the So only it thing is that is making mostly us like happy. they'll be Hmm. carrying your happiness for you. Are you getting my हाँ point? वो So नहीं if होना I'm अच्छा. like these three people are with me, then I am only then I'm happy. So that is like Hmm. now I have put that responsibility on these three people to make me happy. And Hmm. I think this is what you will see in a lot of like relationships, and in fact traditional Indian marriages as well.
where like Hmm. the wife, when she becomes a housewife, they don't have a personal life of their own now. Now it's the Hmm. responsibility, now their happiness or their uh it's like how like their happiness or how their life would lead is uh unfortunately in the hand of the husband only. Like he would be Hmm. driving it, तो अगर ये चलेगा घूमने मेरे साथ, then I can go here, right? Or then Hmm. eventually it comes down to kids कि एक बच्चे के साथ घूमने जाएंगे या they'll make me happy eventually. But you have to like sooner or later you have to realize that happiness, Take control of your own if you are happiness. if you're not Kind of. happy alone, you won't be happy in a relationship. Happiness comes with money, cocaine and bitches, and not with बात तो सही है. people. बात तो सही है भाई. I mean, है तो it is what it is at the end of the day. Yeah, bro. All that I can I say. mean, I don't do anything, but uh, yeah, यार मतलब yeah, I I don't do was anything. also यार no मतलब you are trying to do a lot of things तो अच्छी बात है. I अगर mean, तू कर not रहा है in ना like ट्राई. cocaine sense of thing. I'm not trying to do anything. हाँ हाँ वो तो करना ही नहीं चाहिए. Yeah, clearly पता not. नहीं करना है चाहिए या नहीं चाहिए. बट Yeah, हाँ. bro. But I, I I, think the I topic of had this, psychedelics might be a whole new podcast. ऐसे bro. Do we तीन have? चार We घंटे don't का. have experience in that thing, na. सब But में नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है. वर्केबल एक्सपीरियंस. हाँ, can say. But I think बट पता है we are people like illegal कर दे रहे हैं stuff and everything. I don't get it, bro. Maybe that is how life was intended to be. Have you thought about it? it was ना मतलब पहले तो it Maybe we was were like supposed a to get traditional high. herb in India भाई. Yeah, bro. Maybe we were supposed to do it, and then like for some reason like it got कि नहीं करना है बस, like sudden decision. I think it maybe नहीं we मैं were बताता not हूँ. meant to I live past 50. We were supposed to die at 45 or 60 by heart failures or liver disease or something. अरे हाँ at least I don't want to die on a bed when I'm 80 years old or in a hospital. I Yeah. would prefer मतलब जैसे वो वाइकिंग्स और बाकी सब उसमें था कि you have to die bravely but in a battle it's like only then you can reach Valhalla. So something like that. But But हाँ, what battle would you fight? I don't know. I'm trying to figure out what battle I want to fight. But yeah, Yeah. पता नहीं. But अरे वो था. What was I saying? हाँ मतलब getting back to the topic of psychedelics that you were talking about a few Hmm. way. So I Hmm. just remembered an interesting conspiracy theory. So um, I read it somewhere, probably on Reddit, because all of these conspiracy theories come on Reddit, and Predators. most of them are believable to some extent because they might be true. So Hmm. at least in India, it was legal since till 1986. उसके बाद फिर यूएसए के गवर्नमेंट बॉडीज ने इंडिया को पुश करा कि यू आल्सो पुट अ बैन ऑन दिस एंड मेडिकल बॉडीज. तो इट माइट बी लाइक कि uh, वो they want us to be easy to be governable कि they Hmm. want citizens who are easy to govern. So if they are not easy to govern तो फिर मुश्किल हो जाता है. And I mean इसके पहले तो legal था and everyone was using it. But then why was it suddenly pushed to be banned? And then now recent Right. जो studies है they show that it is like I mean apart from the mm, diseases like cancer, like it has its medicinal properties like कि मतलब Hmm. curing anxiety and depression. And not just that, Right, bro. I think there are some other things also. So I mean if taken in proper quantities and responsibility Hmm. responsibly, it actually
boosts your concentration and other things to some extent. Yeah, yeah, yeah. I Um, was going through this. Nicotine is like a limited dose of nicotine is good for your head, हाँ, for your brain. अरे I think you also remember this. I think I was high and then I was able to code through the night हाँ and हाँ with हाँ हाँ super massive improved concentration, and I was able to bro, push a lot of features. So I don't know, it maybe. happens, bro. It happened with me as well. I Hmm. think that makes sense. This conspiracy theory makes sense. Maybe it was because, see, if let's say today marijuana was legal. Now this is Hmm. not medical advice, but a lot of like people would start self medication. There would like Hmm. therapists would run out of like a major chunk of business. Antidepressants would be pharmaceutical would take a hit, right? Hmm. And I think अब they are legalizing it more and more थोड़ा बहुत like धीरे धीरे is because they have found a way to capitalize that herb now. कि अब now Hmm. they have tried to regulate that market in the countries that it has been made legal. India में it is still Hmm. very like unorganized sector ना. नहीं, let me tell you, मतलब I don't know why I read all of this research, but I do. So, in I think Himachal, around 500 kgs of hash was produced, and Hmm. only around 5 or 10 kgs of it was confiscated, and Hmm. I think 5 kgs, and the rest of 495 kgs actually got used up in this country. So it is not that Yeah. disorganized, and I think the No, I government also mean knows about it. But I mean, it is such a good opportunity for them to actually capitalize to over earn it. money, bro. Yeah, bro. हाँ, वो जैसे वो टेंडर्स ऑलरेडी पास करते हैं, तो Hmm. अगर इनके एग्रीकल्चर पे अगर टेंडर्स पास होंगे तो फिर तो मतलब काफी प्रॉफिट है, टैक्स हाँ, बेनिफिट्स हैं. that is like आई what डोंट I नो. meant by unorganized is that the government के पास अभी कोई तरीका नहीं है ना इसको टैक्स करने का. They are not earning हम्म. from this thing right now. So just imagine, bro, it would be so convenient for consumers and government producers, everybody. Because right हम्म. now, a person who is just starting out his self-discovering journey उसको like one of the fear is that कि bro ये मुझे चॉकलेट दे देगा उसके like hash बोल के he would give me chocolate और अगरबत्ती दे देगा or the flower won't be nice and then there is like if you do not know like how to like properly clean it then the seeds of that flower cause infertility हम्म. and stuff like that. Just imagine it would be so good जैसे अभी you pick up like okay सस्ती दारू पीनी है तो there is BP महंगी पे जाना है हम्म. Jameson double black and everything. Just imagine if that range could be provided in this herb as well where Malana is like for let's say 1500 a tea then 1000 a tea is this strain and that strain and stuff like that bro. It हम्म. would be so easier for the consumers and for the government as well and then I feel just the liberty of lighting a J in public, bro. That is so like you don't have to hide it, find a spot on someone's chat and stuff like that. It would be so liberating. Right. Hmm. But still, Maybe let's someday, see. I bro. think, yeah, someday, or else we can just Maybe. shift to the state of California in USA where it is actually legal. Yeah, bro. I read या फिर this thing कनाडा. on some American law. I don't know. I'm not very sure on it. But there it is like legal to legal to gift it, but not buy it. हम्म. So like basically what people do is that they buy a T-shirt with it. So that way it हम्म. comes like it is counted as it is a gift or something, and they are not like taking it for personal use or something. There is some fucked up shit like a loophole that people have found. उसमें Amsterdam bro we forgot Amsterdam कहाँ पे है? Which uh, नेदरलैंड्स का कैपिटल है. हाँ हाँ I don't know geography, but yeah Amsterdam it is legal. पता Yeah नहीं bro. कनाडा में भी it is.
So I mean, Though I think it is just like if you know the right sources, you'll make it legal here also. Like you'll find your plugs and stuff, but it's just like it's not regulated na. तो पता नहीं चलता. Some days you get like brilliant shit, and other days you'll just have shit. Like mm, it might be actually real shit. yeah, it could be, bro. Yeah. So why? There's this Cool. concert that is happening Hmm. in Delhi. Like a lot of fests are happening in Delhi this weekend, पे, 1st and 2nd April. So there's this Vibe in Fest. तो उसमें Hmm. यशराज is performing. So I was Hmm. trying to find people जो उधर चल रहे. मतलब I am तो going only. I am तो more or less Hmm. confirmed that I am going for यशराज. At least like उसके दिन पे I'm going. But I was just like trying to find अगर कोई company साथ में हो उधर मिल जाए या whatever. But everyone Hmm. is just going for Prateek Kuhad, bro. यशराज के लिए नहीं आ रहा है. And Hmm. भाई everyone has that indie emo phase, bro. And Prateek Kuhad is not even indie at this point, bro. Everyone knows him. This Anuv Jain and Prateek Kuhad, bro. I to genuinely hate both of them. Like not, yeah, I hate them. I was going for dislike, but I realized no, I actually hate them. No Very comments, but sappy, and you still listen to it. नहीं ऐसे not listen to it. I don't think it even comes up recent. अभी तो नहीं है. पुरानी Hmm. प्लेलिस्ट में जरूर पड़ा है. तो अगर कभी हो जाता है तो बता. And Anup Jain हाँ songs are easy to sing पुराने. and play over guitar. So हाँ, you have that game in playing. Though girls are crazy about Anuv and Prateek, so that is there. works for But bro, me. हाँ I'm तो over that bro. Emo phase जो first year में था. Hmm. Like I think सबका तो नहीं मतलब चल ही रहा था mostly लोगों का emo phase उस time पे. Everyone like for me तो I got a crush on this girl in first year ना. So I was like गाने सुन के and everything. I was like हाँ ऐसे ही तो होता है. That is how one-sided. I won't say love, but like one-sided attraction is supposed to be. तो bro पूरा like वही Infatuation is the word you're looking for. infatuation. Yeah. वो पूरा that is how it's supposed to be, bro. And bro, that I don't like that phase of mine anymore, bro. अब तो I have put like Prateek Kuhad and Anup Jain as do not play this artist in Spotify. तो अगर हिंदी मिक्स या कुछ चला देता हूँ उनका गाना आ जाता तो it gets skipped automatically. ये भी सही है. Yeah. ये फीचर नहीं पता था मेरे को. Well, use it, bro. Block these two assholes. नहीं YouTube म्यूजिक पे बस तो अरे आता ही नहीं है. अच्छा just like my hate is also because I don't like that phase of mine, and I generally only do not like sad and emo songs. I mean, I have my days, ek do, but usually I don't. Yeah, हाँ, अब you shifted to hip hop. I have 3 years, 2 3 years completely Indian hip hop. Mostly that is what I listen to. ये सब शुरू हुआ था समय रैना की स्ट्रीम आई थी एक सीधे मौत आर्टिस्ट लाइक सीधे मौत के साथ उसने स्ट्रीम किया था. And from there Hmm. I found their album and just beautiful journey. These songs are great, bro. They're so energetic and everything. That emo element is now gone for good, I guess. एक दिन निकल के But आएगा this, वापस. I think अब I've थोड़ा सा I deal. See, I won't pretend that I have a lot of experience in like or have a very good game. But like I think अब I feel I can handle the crush situation better. I mean, तूने भी देखा है from the first to the second crush, the time and the effect Hmm. of those crush have died down eventually, and I would say yeah, I've cut contact with them for good. But Adulting.
Yeah, that's adulting. Yeah. I adulted late. Adulting for real. I did finally. Yeah, bro. My first crush to, first of all, you to mostly dated all your crushes, na? नहीं, You didn't? Like mostly, I'm talking about. नहीं, I I don't think so. I didn't date like a lot of my crush. So first crush, serious crush, तो was young and I didn't know what to do, so didn't really talk to her. उसके अप्सरा बाद पेंसिल. अप्सरा पेंसिल, yeah. Yeah. I mean, yeah, that was my joke. Ki at such a young age, what, even if you are in a relationship, what do you talk about? Like, is Apsara pencil is better than Nataraj, and that is it. But no, yeah, I had a crush on this girl. फिर अपना school में हुआ. That also got like, I was like pretty fucked in the head. Like कुछ ज़्यादा बात नहीं. In college also, I didn't learn my lesson in first year. Eventually, I think in my third year, yeah, I handled it pretty well. I think so. But Like, what according to you is a बोल पहले. नहीं, नहीं, बोल, बोल. मैं कहता what according to you is a right like time to like I won't say confess, but like let the other person know that this is what you're looking for, and for the in case of a crush like पहली में तो I waited a lot like in college and was just Hmm. like bro दोस्ती भी खत्म हो जाएगी ये भी खत्म हो जाएगा, which now I think is so stupid because at the like Anyway हो गया. uh, हाँ anyway हो भी गया and she wasn't that great of a friend bro. I didn't like really miss that friendship part anyway. Like just I Hmm. made a big deal of it. Second one I was like I guess within 2 months I let her know and stuff didn't go according to plan. Closed that chapter altogether. But तेरे को क्या लगता है कितना टाइम देना चाहिए in the conversation before you, because I think यार, थोड़ा I सा mean, टाइम देना जरूरी इसलिए ताकि she gets to know you थोड़ा बहुत. But then अगर ज्यादा टाइम दे दिया then she starts seeing you as a friend and nothing more. friend zone हो जाता है. तो it's like, हाँ. there are And you end up two hurting ways to yourself it. as well. No, actually, Hmm. there are two ways to it. So, Teach me. my opinions are my opinions, and so it's like either uh, you show it from the beginning that you are actually interested. So Hmm. that is like one way. So the other person already knows that this person is interested, and if they are not into you, then तुमको भी फिर पता चल जाता है कि by their behavior Hmm. if they are not into me, so it's okay. And how And do the other you one is the like हाँ चल पहले you complete. and the other one is to like the long game, obviously. So Hmm. now that might get stretched for very long. So, but yeah, Hmm. the other one Yeah, is the I've long seen game both where of them working. Like so I've they seen a work. couple That is of why I'm long telling you. games working like wonderfully where like to a point where I was jealous that I didn't play this long game. But bro, long game worked for a couple of my knowns. Mm, But like, how do you make her like? What would you do if, let's say, today you have a crush on a girl? What is like? mm. What would you do in showing her that you are interested in dating or relationship and not like a friendship and shit? I mean, you just can't go ahead and pick it up, but uh, Yeah, obviously. it depends. You'll. First off, you give them a lot of attention because Hmm, that is needed, and hmm, then you drop those things into conversations. Like you have to give flirting. some many hints. Huh, kind of. But yeah, matlab, you have to show them that you are actually interested. So you have to drop the hints, Hmm, and that is how eventually they will know. But if they're not, if they're responding properly, then you
can know that they're also interested to some extent. But if they are Hmm. not, then that is also shown. So then, if they are not Huh. interested, and you are also not invested that much because it's just the beginning, then you Hmm. can actually move on. So that. That's the perfect thing, bro. I think if next time I get a crush on someone, exactly this is what I'm gonna do. Just like initially within 2 weeks, I guess set up the groundwork, and agar if you're not getting the response that you want, so just break it off. Move on. Yeah. हाँ So that भाई मतलब acceptance thing na unless comes very unless late. like unless like you are actually interested in a friendship with them. So in that in More often other than case, not, like I'm if not, bro. I हाँ तो think फिर more तो often क्या than ही not, I'm not interested in a friendship because, like, if I'm giving you so much attention, right? In a friendship is like the starting of friendship is very laid back, you know. हम्म So उस sense में and then there you don't need to think so much कि मैं इसको ये बोल दूं because she's a friend only, so you can, you know, not think that actively and just say. But yeah, I think that is like a great thing. But I guess वो acceptance में बहुत time लग जाता है. From day one, I noticed that all the messages that I am sending, the reply is not what I want it to be, or like not she's not reacting the way I like, and ideally a person who would want to continue talking would. But that acceptance काफी late आता है कि अच्छा bro, okay, now it is like okay, you should, you know, call it, give it up and, off. you know, move on. I mean, when you're talking also, then you also eventually realize if they're your type or not. हाँ हाँ So हाँ. तो वो Yeah, भी रहता है. And I mean, it is also that is true. important to let them know your intentions. And मतलब Very yeah. uh, it's like some people are actually in for a casual thing. The other ones are not. They want something serious. So that also depends from Mm-hmm. person to person. Yeah, bro. It's like that typical question online dating world में. What are you looking for here? Kind of shit. हाँ Yeah, bro. भाई वो जो आता है हेडलाइन. हाँ, you're that छोटा सा tag. I think पता नहीं for some reason एक तो I have not had a like I'm trying online dating but there is not a like ऐसी लड़की जिसके like I have like genuinely like I would want to put a lot of efforts. So I just like usually थोड़ा बहुत you know, talk, and if I don't want to, because it's like more often than not you are like the like it's me who is driving the conversation, and I think that is the case with a lot of men on these apps as well. So Hmm. after a point, you know, you run out of these things to talk about, and honestly, bro, texting pay, I feel like it's okay if you are like just want to drop some If you flirty already text know and that everything. person. Huh. And initially also it's good just if you want to set that thing up and, you know, just drop some flirty text, because I feel text pay, since you are putting in a lot more thought while typing, वो अच्छे से you can make something good. But for the genuine conversation, I think meeting or at least a call is necessary. उसके बिना the Hmm. conversation just gets stuck, bro. खत्म हो जाती है उसी बात, मतलब चीज उतने भी, and it's like आगे होगा कि अब नया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, ओके आई एम डूइंग दिस, ठीक है, ओके, एंड देन यू नो यू विल डिस्क्राइब कि तुम क्या कर रहे हो, एंड जस्ट, यू नो, ट्राई टू फाइंड कि उसमें से कुछ टॉपिक निकला है, वहां नहीं निकलेगा, देन यू आस्क अनदर क्वेश्चन और, you know, try to take it another way. It's a lot of efforts, I feel, but we can talk like an whole 2 hours on this, which we would Hmm. eventually, dating online and stuff. Yeah, Yeah, bro. but I do think it is bullshit anyway. So yeah. Online stuff, I think people who put that they are looking for something serious online, Hmm. they're kidding themselves. You can't go in and talk to a person hoping that it would convert to something serious. Either you have your requirements like written down in a book or something, where Hmm. you gauge the person like within a week or something कि हाँ ये मेरी type का है, and then you continue, or else you drop the person. अगर तुम्हारी कोई क्लियरली डिफाइंड ऐसी चीजें नहीं है,
then you'll have to try. And since you have Hmm. already put on that label of serious, you'll also try to make it work in when it is clearly meant not to work eventually. So Right. serious wala to people are just kidding themselves. I have to leave it empty because I don't want to miss out on those matches. चेक की सीरियस लिखा हुआ है कि नहीं. एल्गोरिदम को भी हेल्प करनी चाहिए थोड़ा बहुत. Yeah, bro. It pumps up your profile ना for हम्म. आगे दिखाया जाए. Yeah, bro. सही है. आई थिंक दिस वाज अ नाइस वन. बेटर देन Yeah, द this लास्ट was रिकॉर्डिंग. better than the last recording. It was I really liked it, bro. This one is much better than it. I guess we'll keep trying. I think this can go up. This can go up. I'll आई just मीन आई मीन पहला वीडियो किसी का भी अच्छा होता है नहीं तो. but we'll be there. And if this eventually did go up and it was on YouTube and you did see it, I'm most probably I think you will be one of my friend only because मैं ही story पे और सौरभ story पे डालेंगे तो वही 2 4 5 10 लोग देखेंगे. So if you watched it, bro, please text and बताओ भाई कि कैसा लगा. Just genuine opinion. And yeah, I think अभी हम करें वो like share subscribe वाला or is it too soon? अभी तो channel भी नहीं बना वो. We नहीं also भाई. have to find a name for this podcast. भाई मेरे को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए करना ही नहीं है मतलब. हाँ फॉर कोई नहीं मी मैं इट इज CTA डाल जस्ट. दूंगा. हाँ. लाइक But हाँ शेयर bro, if सब्सक्राइब फॉर दिस गाय. आई मीन दिस गाय हियर. yeah, but हाँ bro, I think genuinely people जो अभी तक रहे हैं वो अपने दोस्त ही होंगे. तो bro please मैसेज कर देना और तुम में से हम्म. भी किसी को बुलाते रहेंगे bro हम. Yeah bro, चलो बुला ही लेंगे bye इवेंचुअली. guys. This is us signing off, and we'll come up with a name and we'll introduce us next time. Next time. Bye bye. बाय बाय. हाँ ब्रो, अब नाम का भी देखना है. तू कह रहा था ना कि तूने कुछ नाम सोचे हैं. यार मैं तो सोच रहा था कुछ ऐसे ही कॉल पर आ जा या मीट पर आ जा या फिर आई डोंट नो बकैती बात है. हाँ ब्रो, मतलब बेसिकली वही कन्वे करना है ना कि जैसे नॉर्मली बात करते हैं आपस में. हम्म. हाँ. अरे ब्रो, ब्रो ब्रो सुनना रख देते हैं. ब्रो सुनना रख देते पॉडकास्ट. हैं. जैसे अपना आपस में बोलते नहीं है ब्रो सुनना. अरे भाई डन. सही है. डन भाई डन. वर्क्स. चल ब्रो यस. सुनना BSN अपना शॉर्ट फॉर्म बनेगा वॉट एवर. ब्रो सुनना. एक बार काम कर, एक काम कर, चैट GPT पे भी डाल के पूछ ले कोई अच्छा निकल आया तो. राइट अवे.